हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग करने वाले हैं फिंगरप्रिंट का सब्जेक्ट बीएम। ठीक है, लेवल पहला इसका चैप्टर करेंगे हम लोग बिल्डिंग मटेरियल का। रॉक एंड स्टोन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ द इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक कौन है, कौन सा एग्जांपल है? तो हाईलाइट, मार्बल, एप्लाइट, डोलेमाइट। तो जो इग्नियस रॉक होती है वो एप्लाइट बोला गया है इसमें। हाईलाइट, मार्बल तो मेटाफर में, हाईलाइट भी मेटामॉर्फिक हो जाएगा। डोलेमाइट भी मेटामॉर्फिक में शायद आ जाए, ये देखते हैं आप क्या है डिटेल। इट इज़ नोन एज प्राइमरी अनस्ट्रेटिफाइड। इट इज आल्सो नोन एज प्राइमरी अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। इग्नियस रॉक को क्या बोलते हैं? प्राइमरी अनस्ट्रेटिफाइड इग्नियस रॉक are formed in the result of the solidification of the molten mass laying below or above the earth's surface. If magma solidifies below the earth's surface itself, the solid crystallization rock is termed deep-seated plutonic rock. The example are granite, apatite, syenite, diorite and gabbro. यहाँ पे हमको ये एग्जाम्पल एप्लाइड, साइनाइट, गैब्रो, ग्रेनाइट भी है, ठीक है ना, डियोराइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्बल इज फॉर्म्ड ऑफ द मेटामॉर्फिक ऑफ द किसके मेटामॉर्फिक? तो ये हो जाता है लाइमस्टोन के। ग्नीस से, ग्रेनाइट से ग्नीस, बेसाल्ट से सिस्ट बनता है। लाइमस्टोन से मार्बल या माल से मार्बल, मडस्टोन या सेल से स्लेट बनता है। सैंडस्टोन से क्वार्टजाइट बनता है। Slate, a rock used for the roofing, start its life as which type of the rock before undergoing metamorphism? स्लेट किससे बनती है? सेल से बनती है। यहाँ पे लिखा है ना ये मडस्टोन या स्लेट, तो ये सेल से बनती है, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पेसिफाई ग्रेविटी ऑफ द मोस्ट ऑफ द स्टोन। 2.6 से लेकर के 2.8 के बीच में होती है। 2.2, 1.2 स्टोन को तो यही होगा मोस्टली। यहाँ पे दिया गया 2.5 से लेकर 3। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द बिल्डिंग स्टोन हो जाती है 2.5 से लेकर 3 के बीच में। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन 100 MPa। इसी को 10 से मल्टीप्लाई कर देगा तो किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। टफनेस इंडेक्स शुड नॉट बी लेस देन 13। टोटल 20 होता है, 20 से मिनिमम 30 के बीच में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन। ग्रेनाइट विच इज मेनली कंपाउंड ऑफ क्वार्ट्ज एंड फेल्सपार पार्टिकल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ग्रेनाइट इज मेनली composed of quartz and feldspar particle, is obtained from metamorphic rock, igneous rock, sedimentary rock, all of the above। तो ये हो जाता है igneous rock, granite which is mainly composed of quartz and feldspar particle is obtained from the igneous rock also known as the primary unstratified rock, are of volcanic origin and form of the result of the solidification of the molten mass laying or above the earth's surface. Hardness and toughness of the stone tiles is evaluated with reference to। तो हार्डनेस टफनेस किससे पता चलती है? और मुहर से, मोह स्केल, मुहर नहीं, मोह स्केल।
मुँह स्केल पे जो हम लोग देखते हैं तो टॉक का 1, जिप्सम का 2, कैल्साइट का 3, फ्लोराइड का 4, एपेटाइट का 5, ऑर्थोक्लेज का 6, क्वार्ट्ज का 7, नॉट स्क्रैच बाय स्टील, 7 के द्वारा भी स्टील से भी स्क्रैच नहीं आता है इस पर, टोपाज का 8, सैफायर का 9 और डायमंड का 10। दो नाम नए मिले मेरे को, एक ऑर्थोक्लोज 6, सैफायर 9। Which of the following material is used to the compound of the calcium carbonate and is commonly used in the building commercial? Calcium carbonate, limestone. तो calcium carbonate and commonly used the building material. Limestone क्या होता है? Calcium carbonate. Stone removal from a natural rock bed is referred to as क्वेरिंग हो जाएगा। A good building stone should not absorb more than 5% of water. 5% से ज़्यादा नहीं। देखो स्टोन क्या होता था, कई जगह आपने सुना पत्थर मारा जाता है, एक हाथ में पकड़ के मारते हैं ना। ये पत्थर लिया है कोई, अब फेंक रहा है दम लगा के। याद करने के लिए ट्रिक है, और कोई दिमाग मत लगाना ज़्यादा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी ग्रेटर देन 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, से ज़्यादा इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए, हाई ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस 14 से ज़्यादा होना चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 से ज़्यादा होना चाहिए, टफनेस इंडेक्स 13 से ज़्यादा होना चाहिए, वाटर एब्जॉर्प्शन 5% से कम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टोन इज यूज्ड फॉर द फायर रेजिस्टेंट मशीनरी? फाइन ग्रेन ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन। The example of different rock classified on the basis of the geological formation as igneous, sedimentary and metamorphic rock are given as option. Identify the incorrect combination. Igneous cyanite, ठीक है, metamorphic gneiss, sedimentary marble, ठीक है, sedimentation limestone। करेक्ट कौन सा होगा? मार्बल मेटामॉर्फिक में आ जाएगा, सेडिमेंट्री नहीं है। हाँ, लाइमेटोन से मेटामॉर्फिक होता है। इग्नियस रॉक, ग्रेनाइट, साइनाइट, डिओराइट, गैब्रो, हाइपोवेसल, डिओराइट वेसल, ये हो जाते हैं इग्नियस रॉक, ग्रेनाइट, साइनाइट, गैब्रो, हाइपोवेसल, डोलेराइट वेसल। सेडिमेंट्री रॉक कौन कौन से होते हैं? सैंड स्टोन, लाइम स्टोन, सैल, चाक, ड्यूटोमाइट, जिप्सम, डोलेमाइट, लाइम, ट्यूफस, एनहाइड्रेट, मैग्नेसाइट, कॉन्ग्लोमेरेट, ब्रेसिया। मेटामॉर्फिक रॉक, ग्नीज, ग्रेनाइट, ग्नीज, क्वार्जाइट, मार्बल, सिस्ट, स्लेट, हाइलाइट। हाइलाइट भी मेटामॉर्फिक है। Select the Indian Standard Code which of the provide guideline testing and deformation of the compressive strength of the natural building stone। क्या होता है मुझे याद नहीं, देखते हैं। 1121 पार्ट 1 2013 में। ठीक है ना, कोड वाले क्वेश्चन
याद रखने, इसका हम स्क्रीनशॉट एक अलग से ले रहे हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन पार्ट 1 में हो जाएगा। ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ हो जाएगा पार्ट 2 में 1121 की। टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाएगा पार्ट 3 में, और पार्ट 4 में हो जाएगा शियर स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन। एब्जॉर्बिंग टेस्ट ऑफ स्टोन 1124। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द टेस्ट ऑफ स्टोन 1126। ग्रेनाइट रॉक आफ्टर मेटामॉर्फिस गेट ट्रांसफॉर्म्ड टू मार्बल, स्लेट, क्वार्टजाइट, gneiss. मेटामॉर्फिस गेट ट्रांसफॉर्म्ड टू मार्बल, स्लेट, ग्रेनाइट का gneiss बनेगा। gneiss इज अ टाइप ऑफ द इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, नॉन अबव हो जाता है मेटामॉर्फिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉस एंजल्स टेस्टिंग मशीन इज यूज्ड टू कंडक्ट ऑफ द अट्रिशन इम्पैक्ट एंजलिस से क्या हो जाएगा, अट्रिशन टेस्ट नहीं अम्प्रेशन टेस्ट। लॉस एब्रेशन, एब्रेशन की वजह से लॉस हो गया घिसने की वजह से, ठीक है ना, यही बात, इसीलिए तो इसका नाम भी पड़ा है। तो लॉस एंजलिस मशीन क्या बोलता है, एब्रेशन टेस्ट इज कॉमनली यूज्ड फॉर द मेथड ऑफ द इंडिकेट रेट ऑफ द वेयरिंग ऑफ द स्टोन एब्रेशन ऑफ द एग्रीगेट। Abrasion value of force aggregate determined by the Los Angeles machine. The maximum allowable Los Angeles abrasion or highly quality surface course is maximum allowable loss abrasion 30%. Abrasion value for base course aggregate should not be greater than 45%. 30 से 45% से बीच में होना चाहिए, 45% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जंपर इज यूज्ड फॉर द टेस्टिंग ऑफ द स्टोन, क्वायरिंग ऑफ स्टोन, ड्रेसिंग। जंपर तो क्वायरिंग हो जाएगा। जंपर इज यूज्ड टू मेक कास्ट होल एंड इफेक्टिव बोरिंग नीडल, वर्टिकल होल यूज फॉर क्वायरिंग। अगला क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक आर द रॉक ऑफ द इन्वॉल्व बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मैकेनिक केमिकल। तो ये हो जाता है मेटामॉर्फिक रॉक, नहीं सेडिमेंट्री रॉक, बायोलॉजिकल एक्टिविटी। सेडिमेंट होगा धीरे धीरे सेडिमेंट्री रॉक। द टाइप ऑफ द रॉक विच आर फॉर्म्ड ऑफ द रेगुलर डिपोजिशन ऑफ द weathering, pre-existing rock, sedimentary rock. According to Mohs scale of the hardness, the mineral with last hardness is Mohs scale of hardness. The mineral with least hardness is talc. एक होता है talc, easily sketched with the thumbnail. Talc, gypsum, calcite, fluoride, apatite, feldspar होगा। क्वार्ट्ज, टोपाज, कोरंडम, डायमंड। कोरंडम भी शायद है, देखना पड़ेगा, याद नहीं आ रहा, पहले का याद था तो भी बोल रहे हैं। यहाँ पे ऑर्थोक्लॉज बोला गया, एक को सफायर बोला गया 9 में। वो पहले आता है, इसका आता है PQRS, तो पहले आ जाएगा 6 में, फिर आएगा 9 में S। विच आर द फॉलोइंग मिनरल हैज द हार्डनेस ऑफ द 8 बेस। 8 किसका होता है, टोपाज का। अमॉन्ग द फॉलोइंग हार्डनेस मिनरल
हार्डेस्ट मिनरल क्वार्ट्ज, माइका, कैल्साइट। रॉक एक होता है क्वार्ट्ज का 7 होता है, कैल्साइट का 3 होता है, एक होता है माइका का। माइका कुछ नहीं दिया, इसी हिसाब से तुम्हारा ए हो जाएगा, क्वार्ट्ज सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉक? जिप्सम, ऑगरटाइट, कैल्साइट, माइका। जिप्सम है क्या रॉक? जिप्सम रॉक है। केमिकली प्रेसिपिटेटेड सेडिमेंट्री टाइप रॉक, ठीक है ना, कैसी है ये? केमिकली प्रेसिपिटेटेड सेडिमेंट्री टाइप रॉक। ऑगाइट, कैल्साइट, माइका आर द मिनरल फॉर्मिंग रॉक। इग्नियस रॉक इट इज नोन एज, ये तो बता ही दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन belong to which type of rock? Sand and lime, metamorphic, limestone sedimentary rock है। मार्बल होता तो मेटामॉर्फिक हो जाता। Which of the tests usually carried out on the sandstone and cannot be applied on limestone naturally? Sandstones usually carried out on sandstone, limestone naturally, and cannot be applied to limestone naturally. The test of the check of the presence of the poorly weathered calcium carbonate cell, calcium test, crystallization, activation, acid test. Acid test करते हैं। In this test, a stone is kept 1 week of the solution sulfuric acid and hydrochloric acid having 1% strength वाला। The corner of stone which have high alkaline content turn roundish and loose particle will get disposed on its surface. Such type of stone are the usually unusual for smoky atmosphere air. The stone having percentage of the lime content exhibit efflorescence and which when subjected to action of acids, it is the natural that this test cannot be applied to limestone and usually carry out the sandstone. The presence acting on the stone in a stone masonry construction should be the pressure acting on the stone masonry construction should be 45 direction of the bedding plane, 60 degree the direction of bedding plane, along the direction of bedding plane perpendicular. This type of the following test can be performed on a stone to check their durability. स्मिथ हो जाएगा, परमेबिलिटी नहीं होगा, वैन स्मिथ नहीं होगा, स्टैंडर्ड नहीं होगा, स्मिथ हो जाएगा। Smith test is performed to the stone of the soluble and clay matter. It is in Smith test break of the Fresic quarry stone chipping to about the size of a rupee coin and put them in the glass of clean water. The water becomes slightly cloudy. The stone is good and durable. If water becomes dirty, the indicate that the stone content too much earthy appear. यहाँ पे लगाना पड़ेगा। Slightly cloud. Stone is good.
water gravity, much energy. अगला क्वेश्चन, the granite rock rich in cavities. The igneous rock rich in cavities is ग्रेनाइट, बेसाल्ट, कैब्रो, डोलोमाइट. डोलोमाइट कैविटी में जो रह जाता है वो डोलोमाइट होता है बीच के बीच. द igneous rock rich in the cavities of dolomite. Due to source of the magnification metal and magnesia, this is constituents of the refractory bit. Dolomite is used mainly in the iron and steel industry as a fluxing agent and used to the construction industry. Luster does not depend on refractory index, absorption of materials, transmittance of mineral, nature of reflecting surface. Absorption of minerals नहीं, सी ट्रांसमिटेंस ऑफ द मिनरल्स इस पर नहीं डिपेंड करता. चमक, ट्रांसमिटेंस. The appearance of the mineral surface each term as the light reflective quality. Luster depend upon the mineral refractive power, diaphanity and structure. Non-metallic luster has the reference category 2 and generally depend on the much height is reflected. In which method the adopter of acquiring hard stone having no fissure or cracks? Which is the method adopting for the acquiring hard stone having no fissures or cracks? No fissures or cracks. Preheating, batching, digging, blasting. Batching, blasting. हार्ड स्टोन के लिए ब्लास्टिंग, हैविंग नो फिशर्स और क्रैक्स. सही बात, ब्लास्टिंग किया जाए. Quarrying of the building, blasting method. Quarrying of the building stone hard and compact rock is usually carried out by the blasting technique. In this method, the explosives are used to convert rock into a small pieces of the stone. The stone is used to the stone excavated in the very hard variety and has no crack or fissures. Moreover, if stone is to be excavated on very large scale, blasting method will have to adopt it. Explosives such as a blasting powder, blasting cotton dynamite are used. The operation involved boring, canal chamfering, BCTF, boring, charging, tampering and firing. अब तो बाद में लगाना. Identify the example of the unstratified rock. Basalt, unstratified. सब स्ट्रेटिफाइड में से स्लेट स्ट्रेटिफाइड है, सेल स्ट्रेटिफाइड, सैंडस्टोन है, बेसाल्टी नहीं होगा. Unstratified rock. These do not possess plane of the stratification. They possess crystallization and compact grain. Igneous rock and unstratified rock. Example: granite, trap, basalt, etc. Marble and quartzite are the stratified rock as type of the metamorphic rock.
Heating is the one process of the quarrying with hand tool. I utilize compressive air, use of the channel machine, the blasting with explosive with hand tools. तोड़ना फोड़ना भी तो पड़ेगा, दरार होती है खाली हीटिंग से. Which is the best performed to find out the presence of soluble matter in sample of stone. Which is the test performed to find out the presence of soluble matter? स्मिथ 1% रहता है, जो भी रहता है, एसिड वगैरह. आइडेंटिफाई द सिलिशियस रॉक बेस्ड ऑन द केमिकल क्लासिफिकेशन. सिलिशियस मार्बल, डोलेमाइट, लेटराइट हो जाएगा, नहीं ग्रेनाइट है सिलिशियस. This principle constitutes of the silica is sand rock, very hard and durable, granite, basalt, trap, quartzite, gneiss, cyanite, etc. Calcareous, the principal constituent is limestone, marble, dolomite, etc. Argillaceous, the principal constituent is clay. The rock and hard brittle slate, laterite, etc. अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एसिड ऑफ द इग्नियस रॉक फ्रॉम द बिलो लिस्ट रॉक. एसिड टाइप ऑफ इग्नियस रॉक, गैब्रोलाइट, डोलेमाइट, रियोलाइट है. अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें टेस्ट हो जाएगा इग्नियस रॉक. हीटिंग इज द प्रोसेस फॉर क्वेरिंग फॉर द विथ हैंड टूल्स. ये सब भी हो गया है. आइडेंटिफाई द एसिड ऑफ द इग्नियस रॉक फ्रॉम द बिलो लिस्ट रॉक. एसिड टाइप ऑफ इग्नियस रॉक तो रियोलाइट है. पेरियोडोटाइट क्या है पता नहीं, गैब्रो क्या है, गैब्रो और डोलेटाइट. गैब्रो तो हो जाएगा, मेटामॉर्फिक तो डोलेराइट हो जाएगा, इग्नियस में है. एसिड रॉक 70 से 80%, ग्रेनाइट, रियोटाइट. एसिड टाइप रॉक ग्रेनाइट और रियोलाइट 70 से 80% सिलिका होता है. इंटरमीडिएट रॉक में 60 से 70% सिलिका, साइनाइट, एंडेसाइट. बेसिक रॉक 45 से 60% सिलिका होता है. गैब्रो एंड सम वेराइटीज ऑफ द डोलेराइट. अल्ट्रा बेसिक रॉक 30 से 45% सिलिका होता है. पेरियोडोटाइट एंड सेम वेरिएंट ऑफ द बेसाल्ट एंड डोलेराइट. आइडेंटिफाई द इग्नियस रॉक विथ सिलिका कंटेंट ऑफ 60 to 70%. साठ से 70%. सिलिका कंटेंट ऑफ 60 to 70%. 60 से 70 साइनाइट और एंडेसाइट ये दिया गया है. जबकि ग्रेनाइट, रियोलाइट 70 से 80% इसमें सिलिका होगा. Some attrition value. Dry test for the good quality stone suitable for the road materials should not be more than 40%. Stone attrition test for good quality stone suitable road materials should not be more than 3%. 2% बोला है यहाँ पे. देखते हैं डेवल एट्रिशन टेस्ट. परसेंटेज ऑफ लॉस, ड्राई टेस्ट, वेट टेस्ट. क्वालिटी 2% से कम है तो वेरी गुड, 2 से 2.5% है तो गुड.
2.5 से 3 है। वेट कंडीशन में 2 से 3% से कम, 2 से 30% तक, 2 से 3% वेट वो लॉस हो जा रहा है तो गुड है, लेकिन 2 से 2.5 ड्राई होना चाहिए। 2.5 से 3 और 3 से 4 क्लेरी, 3 से 4, 4 से 5 पुअर, ओवर 5, ओवर 4, ओवर 5 वेरी पुअर। वेट में ज़्यादा लॉस होता है। बोथ ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट बिलोंग टू ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट। इग्नियस है, ठीक है। Hello, Moto. Both granite and basalt belong to the igneous rock. Identify the type of the calcareous rock. Calcareous laterite नहीं, मार्बल आर्जिलेशियस होती है। आर्जिलेशियस प्रिंसिपल ऑफ द कंस्टिट्यूट ऑफ क्ले और एल्यूमिना। एग्जाम्पल स्लेट, लेटेराइट, सेस्ट, कैलोनाइट। Calcareous is principle of limestone, marble, dolomite, etc. 24-hour water absorption of granite should not be greater than 5%, 1%। अच्छा, गुड के लिए 5% से ज़्यादा नहीं, लेकिन ग्रेनाइट के लिए 1% से ज़्यादा नहीं। सैंडस्टोन 10% से ज़्यादा नहीं, लाइमस्टोन 10% से ज़्यादा नहीं, ग्रेनाइट 1% से ज़्यादा नहीं, ट्रैप 6% से ज़्यादा नहीं, सेल 10% से ज़्यादा नहीं, स्लेट 1%। छत के लिए ज़्यादातर यूज किया जाता है स्लेट। ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट 3%। Which of the following is a type of the argillaceous rock? Is a type of argillaceous rock. Laterite. In which of the following texture of rock the arrangement of the mineral is in the form of the parallel layers? The arrangement of the minerals is in the form of the parallel layers. Foliated. Specific gravity of the structure. Based on the physical characteristics, the rock may be classified or stratified, unstratified, or foliated. Foliated have the tendency to split up only in a definite direction. Most of the metamorphic rock has foliated structure, except for the quartzite and marble, which have granular structure. The specific gravity of structural granite, when tested according to IS 1121 Part 1 1947, shall not be less than 2.6 1121 1974 Part 1 compressive should not be less than 1000 kg per centimeter square या 100 megapascal. Approximate specific gravity value of a soil constituent quartz is
constituent quartz is gravity soil quartz 2.65 हो जाएगा. एंसेनाइट बेसाल्ट 2.9 2.71 कैल्साइट ग्रेनाइट 2.7 लाइमस्टोन 2.65 क्वार्ट्ज 2.8 एंटेसाइट सबसे ज़्यादा. द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सिलिशियस रॉक इज लाइम क्ले. सिलिशियस बोला है ना, स्लेट नहीं सेंड हो जाएगा. A rough estimate of the quantity A of a dynamite required in gram for blasting rocks is given by L square upon 0.008. Quantity of explosive required ये हो जाएगा quantity of gunpowder in gram. Length of line of lead resisted m मीटर में L. In industrial towns, stone are preserved by the application of which solution? Stone are preserved by Brita CCl to H2SO4. Industrial towns, stone are preserved by application of which solution? कौन सा सोल्यूशन लगाते हैं पता नहीं हमको तो. क्लियर बराटा है. बरेटा barium hydrate. When Barretta solution is applied over the stone surface, barium hydroxide react with calcium sulfate present in the stone and form barium sulfate. Barium sulfate BaSO4. The barium sulfate formed in the insoluble and it least affected by the atmosphere agency. The rocks formed due to the cooling of magma at relatively shallow depth from the Earth's surface are called rocks formed due to cooling of magma at relatively shallow depth from the Earth's surface are called rock formed due to the cooling of magma at relatively shallow depth from the Earth's surface are called residual hypobasal metamorphic volcanic. Shallow depth hypobasal formed due to the cooling of the magma at relatively shallow depth. Example dolerite. Volcanic rocks such as the formed due to the pouring of magma on Earth's surface volcanic rocks हो जाएगा. Chemically precipitation sedimentation rocks. Name of rock precipitate type gypsum, calcium sulfur and oxygen. Limestone, calcium carbonate. Dolomite, calcium magnesium carbonate. Gypsum, calcium sulfur and oxygen. Limestone, calcium carbonate. Dolomite, calcium magnesium carbonate.
दो लो दोनों, लाइम भी और मैग्नीशियम भी। रियोलाइट रॉक्स आर टाइप ऑफ द igneous type of the rock formed due to the cooling of the molten magma below the earth's surface. Granite, basalt rock, rhyolite, etc. Metamorphic, a type of rock formed from an existing rock that is changed by heat, pressure of chemical reaction. Quartzite, gneiss, slate, marble, etc. A broad-faced chisel used for dressing a stone to comparatively smooth surface is called blaster. A broad-faced chisel used to the dressing a stone to comparatively smooth surface is called blaster. Aggregates are tested by alternate wetting and drying. In which of the following test? Durability. Crushing test. Aggregate crushing under the gradually applied compressive load. The aggregate crushing value should not be greater than 30% for the surface course or 45% for the base course. The polished granite stone will check by using glass meter, smoother, grinder, spinner. Polished granite check using of the polish of the surface quality. Glass meter. The gloss meter is an instrument that is used to measure the specular reflection on the earth's surface as a polished glossy हो जाता है ना पॉलिश करने से. Gloss is determined by projected a beam of light at the fixed intensity and angle onto a surface and measuring the amount of the reflected light at equal but opposite angle. Which of the following rock is classified as metamorphic rock? मार्बल, ग्रेनाइट नीच बनता है, साइनाइड भी नीच बनता है, सेल का स्लेट हो जाएगा, सैंडस्टोन का क्वार्टजाइट और लाइमस्टोन का मार्बल. द स्टोन is said to be a moderately tough if the toughness index of the stone is in the impact test is 13 से 19. Moderate. MT 13 से 19. पी का 16 होता है, बिलो 13, 16, मोर देन 22. ठीक है ना. What is the chemical composition of the quartz material? SiO3 O2 है, SiO2. Sandstone consists of quartz and lime. Sandstone, quartz and silica. Quartz, lime and silica. Sandstone में सब कुछ होता है. The granite specific gravity of sandstone is 2.65 से लेकर 2.9895. 55 से लेकर 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बीच में इसकी स्ट्रेंथ हो सकती है. मोस्ट सुटेड फॉर द रोड मिनरल
in the form of the flagstone for paving, tile stone for roofing, natural stone for ornamental work, and GUT heavy engineering material works. The chemically precipitated sedimentary rock is chemically precipitated sedimentary rock is chemically gypsum पक्का मेटामॉर्फिक हो जाएगी एंडेहाइड जिप्सम डोलामाइट और मैग्नेसाइट chemically precipitated which constitute of the silica feldspar माइका एम्फियोवाइट क्वार्ट्ज होता है SiO2 second most abundant mineral in the earth constituted crust behind the feldspar mineral composite of the silicon and oxygen atom. Carborundum is a polishing abrasive stone. काला होता है चिकना टाइप का होता है ये होता है कार्बोरेंडम गोल गोल आता है पत्ता जब मशीन में लगाते हैं फिर उसको घुमाते हैं सब तरफ चिकनाहट आ जाती है among the different silicon carbon dioxide commonly known as the carboxide silicon carborundum होता है it use of an abrsion for the cutting grinding and polishing as the anti-slip additive and refractory it is hard because it has crystal structure like that of a diamond among the different type of rock given under option identify the igneous rock different type of rocks given under option आइडेंटिफाई igneous रॉक igneous बताना है सैंड लाइम स्लेट ग्रेनाइट हो जाएगा igneous और क्या है ग्रेनाइट इज द कोर्स ग्रैंड igneous रॉक कोर्स ग्रैंड होती है ग्रेनाइट GC compose most of the quartz feldspar and plagioclase it is a common in earth constituent crust where it is found in various kind of the igneous institutions it has a comparative strength usually 200 megapascal its specific gravity is in range of 2.65 to 2.75 cell is compressed and मेटामॉर्फिक सेल नहीं स्लिट हो जाएगा वो लेमिनेटेड cell is a laminated fissile elastic sedimentary rock that composed of the predominance of silt and clay other mineral especially quartz and calcite अगला क्वेश्चन which of the following type of the rocks exhibit greatest crushing strength when compared to the other mentioned type of rock
ज़्यादा क्या है, तो लेटराइट ट्रैप सैंडस्टोन की ज़्यादा होगी, 110 तक जाती। ट्रैप की ज़्यादा है क्रशिंग स्ट्रेंथ, सैंडस्टोन का 650 जा रहा है किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे 1100 कुछ था ना, एक सौ दस, अच्छा 1100 नहीं 110 था, 650 यहाँ पर बोल रहा है न्यूटन पर 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। लेटराइट 18 से 32 सबसे ज़्यादा है किसकी, 1536 से 1829, और स्लेट की होगी 2100। क्रशिंग स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या चल रहा था, ट्रैप। ट्रैप है कहाँ, लेकिन इसमें तो क्या होना चाहिए, स्लेट है नहीं, सेल है नहीं, लेटेराइट नहीं, सैंडस्टोन 650 यही हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे ख्याल से इसमें, इन सब में से। बाकी तो सबसे ज़्यादा होती है, 2100 तक जा रही है स्लेट की। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिलिशियस एंड अनस्ट्रेटिफाइड Argillaceous granite, siliceous and unstratified. The number of the mineral arranged in Mohr circle 10. Which of the following is suited for usually rubble masonry foundation work? Basalt. फाउंडेशन वर्क, स्पेशियल ग्रेविटी 2.6 से लेकर 3, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 200 से 300, द एबिलिटी ऑफ अ मिनरल टू ट्रांसमिट द लाइट फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड इज नोन एज, transparency. Which of the following tests are done for frost resistant to assess durability of the stems? Smith. Bread test. This test is done to check frost resistance. Frost resistance. Pressy-quiet stone are immersed in the boiling solution of sulfate of soda and waste. These are removed and kept the suspension few days and wait again. The loss of the weight indicate the probable effect of the frost. Which of the following is an example of the artificial stone? Andesite, ransom stone, ransom. Chemical stone. Ransom stone also are chemical stone prepared by the mixing of the soda silicate and cement. These stones provide pleasing and decorative flooring. Pressing strength of laterite stone is, pressing strength of laterite stone is, laterite ना 75 से 180, 18 से 32 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 18 से 1.8 से लेके 3.1 यही हो जाएगा। आंसर इसी पे लग रहा है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। लेटेराइट 1.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। लाइमस्टोन 40 से 90
न्यूटन पर mm²। सैंडस्टोन 55 से 110 न्यूटन पर mm²। सेल 0.3 से लेकर 0.8 न्यूटन पर mm²। According to Moore hardness scale, the hardness value of quartz 7. Which of the following rock belong to the category of the igneous rock? Igneous, lignite, डोलेराइट। डोलेराइट तो है ही igneous, दोनों तरफ फंस जाता है बीच का बीच। ग्रेनाइट, डोलेराइट, बेसाल्ट रॉक, पेगमाइट एंड डियोराइट। डियो एंड डोरी दोनों हैं। The tendency of a crystallized mineral to break the certain direction, yielding more or less smooth surface is mineral to break the certain direction, yielding to break certain direction, cleavage. The color of the powdered mineral streak. Which of the following type is a chemical classification of rock? As argillaceous, नॉट बोला गया है, सॉरी, पॉल्यूटेड नहीं होता है, जबकि सिलिशियस कैल्शियस तीनों होता है। आर्जिलेशियस में स्लेट, क्ले, मड स्टोन, लेटेराइट आ जाता है, जबकि कैल्शियस मार्बल, लाइमस्टोन आ जाता है। सिलिशियस में ट्रैप, क्वार्ट्ज, ग्रेनाइट आ जाता है। व्हेन द rock are classified on the basis of the physical characteristics, the type of rock that has a tendency to split in defined direction, cleavage, वो बता रहे फॉलेटेड। Which of the following is the stratified rock? Marble, granite, stratified, मार्बल मार्बल नहीं होता, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, मार्बल ही होगा यहाँ पे। कहीं कहीं पे मार्बल को नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पे है। शोज अ डिस्टिंक्ट लेयर, दिखती है कभी कभी। अमंग द फॉलोइंग विच ऑफ द रॉक प्रेजेंट अ बेडेड स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर? विच रॉक? स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर, सेडिमेंट्री। What is the mode of the action of the jaw pressure? Grinding, breaking. Which following is belong to the category of the sedimentary rock? Sandstone, mudstone, limestone, sub. Which of the following stone can be used for the rough stone work? Marble, laterite, chalk, granite, laterite। चौक का कहाँ स्टोन हो पाएगा? Crushing strength of good building stone should be more than 100 Newton per mm². Which of the following is the sedimentary rock? Which of the following is a sedimentary rock? Limestone, gneiss, granite, dolerite। limestone। Which one is the metamorphic rock? स्लेट बनता है लाइमस्टोन से, मार्बल बनेगा, सैंडस्टोन बनेगा, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट। स्लेट से स्लिस्ट बनता है क्या? स्लेट लेकर फिर सिस्ट आदमी बन जाता है।
Which of the following stone is maximum pressing strength? Granite, sandstone या सिलेट का ज़्यादा है। सी ग्रेनाइट ज़्यादा है। प्रेसिंग स्ट्रेंथ 2100 तक जाता है। चौक का कोई मतलब नहीं है। सैंडस्टोन, स्लेट और ग्रेनाइट में से बताना था। सैंडस्टोन का 110 तक ही जाता है, जबकि ग्रेनाइट का इससे 2100 दुगना जाता है। The plutonic rock are formed depth below the earth surface. Plutonic greater than 200 किलोमीटर, 10 किलोमीटर से ज़्यादा। In which level 2 क्वेश्चन हो गया है। In which type of the dressing of stone are about 1 centimeter vertical horizontal group sunk with the chisel, hollow semicircular with a homoswing, punch dressing reticular, close pick and fine blasted and drop finish। पंच ड्रेसिंग है क्या ये? 85 को बन बोल दिया पंच है। पंच स्टोन फर्दर ड्रेस्ड ऑफ्टन फाइनर सरफेस। इन विच टाइप ऑफ द फिनिश्ड is the booster or chisel used to make non-continuous parallel marks on the stone surface. These marks may be horizontal, inclined or vertical. Dragged or combed, finished. Expanded periodic expanded perlite is used as an insulating material. It is chemically inert substance composed basically of limestone and rock salt, glass and calcium carbonate, silica and alumina, asbestos and mica. Insulating material. Chemically inert substance composed basically of पता नहीं क्या है, सिलिका एंड एल्यूमिना। Expanded perlite is used to the insulating material. It is a chemically inert substance composed basically किसका बना होता है perlite? सिया। Expanded perlite is a volcanic rock containing from 2 to 5% bonded water. It is chemically inert substance composed basically of silica and alumina, but some impurities such as Na2O, CO, MaO, CO2 are absorb moisture easily. Endure abrasion test the hardness is empirical formula क्या होगा? 20 minus loss in weight by 3. According to the diameter of lateral dimension, a test piece of the stone should be finding of the compressive strength should not be less than 75, 50. Lateral dimension should not be less than 1 by 1.
Which of the following rocks are important to geotechnical engineers because they are cover 75% of the Earth's surface? Sedimentary rock. Excavation wedging heating is the most suitable method for covering a small thin and rectangular block stone from rock. Wedging में heating है. Suitable for covering thin and regular block of example granite niche. Identify the example of aggregate with granular texture. Sandstone. Granular sandstone oolite fracture showing more or less uniform rounded grains. Glossy black flint vitreous clay conchoidal fracture. Smooth gravel charred slate marble. Smooth gravy water वगैरह वगैरह. Which of the following querying is suitable for the costly soft and ये हो जाएगा वेजिंग. कॉस्टली है ना. minimum required in size. Which of the following permissible 24 hour trap stone by volume? 5% से ज़्यादा नहीं, 2% से ज़्यादा नहीं, 3% बोला या 6% हो गया. सैंडस्टोन 10%, लाइमस्टोन 10%, ग्रेनाइट 1%, ट्रैप 6%, सेल 10%. ट्रैप 6%. Which of the following is not a common type of stone used as building material? Which of the following is not a common type of stone used as building material? Marble, limestone, granite, gypsum. building material not type of stone नहीं है. इट इज ऑर्नामेंटल कॉलम वॉलम इन सब के लिए यूज किया जाता है इसको. इन इंडिया stone with a specific gravity should not be less than 2.8. 2.4 अनसूटेबल है. इससे कम होने पे 2.4 से कम है तो उसको अनसूटेबल बोल देंगे. डेंसर स्टोन आर स्ट्रॉन्गर, लाइट वेट आर वीक, हैंस स्टोन विल बी विथ a specific gravity of less than 24 are considered unsuitable in buildings. As per the IS recommendation, the minimum crushing strength 3.5 Newton per mm square. For any building block, a good stone should not show wear of
more than 2%. Stone with a toughness index of more than 19 preferred for road works. In which type of dressing are only the edge of a stone block level with the help of hammer. Dressing are pitch dressing, rough dressing, pitch dressing. Pitch dressing हो जाएगा. Pitch dressing, this type of dressing only the edge of the stone block and made are made level with the help of the hammer. Superfluous mass on the face is generally left intact. Hammer dressing. Hammer dressing is the which classification system is commonly used for the categorized rock based on their mode of origin: granite, intrusive, extrusion, igneous, sedimentary, metamorphic. Categorized rocks with their mode of origin based on geological information. ये जो भी है पढ़ लीजिएगा. What is the application of the stone block pavement? What is the application of stone block pavement? Pavement क्या? Subbase of for impact roads, residential street. This here harbors stone blocks. What is the application of stone block pavement harbors? As I talk about the quantity of the blasting powder should be calculated. Rule of the thumb the न्यूटन में है तो 150 ml. Blasting powder in Newton line of the liter meter square पर 1.8 तो है नहीं है 1.5 है. यही है line of liter in meter square into 1 bar. अगला क्वेश्चन. Which of the following stone is mined easily by the digging and excavating method of the stone quarrying? Which of the following stone is mined easily by digging and excavating method? Quarrying. Easily बोले माइलस्टोन, लेटेराइट, लाइमस्टोन, मार्बल. लेटेराइट को जो आसानी से बोला. क्वायरिंग मेथड ऑफ द क्वायरिंग एक्सकेवेशन लेटेराइट, वेजिंग, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, मार्बल. हीटिंग ऑफ ब्लास्टिंग ग्रेनाइट नीस. अगला क्वेश्चन. आर द ग्रेनाइट पीस their surface hardened by keeping immersed in the soda silicate for about 2 months. In which method the stone dressing a 20 mm white margin is made along the edge of the stone and
Irregular sinking about 10 mm wide and 5 mm deep are marked in the interior portion. Rectification finish. In this type of the finish, a 20 mm wide margin is made along the edge of the stone and बहुत खबर है ये तो देख लिया जाएगा इसको बाद में. अगला क्वेश्चन. What are the three primary type of the igneous rock? Granite, basalt, plutonic, volcanic and टिक्स तो नहीं था लेकिन टिक्स है अभी. हाई टेम्परेचर मोल्टन पूल है. अगला क्वेश्चन. रिकमेंडेड द डायमेंशन और वर्कमैनशिप एंड नेचुरल बिल्डिंग स्टोन फॉर द masonry work इज given in the following high score. 1127 based on the geological classification, 6 rocks are given in the below. That identify the rocks which do not fall under the same category: gneiss, slate, marble, quartz, dolomite, marble only. इससे check करके है बी igneous, granite and dolomite अलग हो सकते हैं. The artisan test on the stone is performed. Artisan test on a stone is performed. Artisan test on the stone is performed to determine the crushing structure of the resistance of the stone, rate of the bearing, stability. Loss and जैसा abrasion हो गया वो. Artisan will determine crushing strength here for rate of the wear of the stone due to the ornamental work should be soft. Rock formed by the alternately existing rock hitting igneous instrument of the pressure due to the crustal movement are known as metamorphic or sedimentary. Metamorphic. Other question. A freshly cut stone carries some natural moisture sap. Exhibits less crushing strength when compared to the other type of stone. Rock exhibits less crushing strength when compared to the other mention of the laterite and trap gneiss. Laterite. Which of the following Indian Standard Code provisions provide the procedure of the determination of transfer strength of natural gas 21 parts second? Metamorphic or natural rock prior to referred as probably extrusive, intrusive, digestive, prolithic, prolith. Metamorphic rocks. It is fundamentally rock that have the experience change due to the high pressure and temperature. Below zone of diagnosis. Initial rock prior to the metamorphosis is shallow grade metamorphic rock. Original texture are protecting allowing upon the determinate widely
protolith. Which of the following is the metamorphic stone has the porous and spongy structure? Gneiss या लेटराइट है, स्पंजी स्ट्रक्चर. Sedimentary rock in which of the individual grains लेटराइट तो ये हो गया. आयरन ऑक्साइड अवेलेबल इन द डिफरेंट कलर. Sedimentary rock in which the individual grains angular shapes, the size of the sands are defined as silt rock. Sedimentary rock classified based on the size and shapes and noxious constitute particle of the granular sandstone. These consist of a grain varying between 2 से 1/16 mm are called arensenite. ओके, हो गया. अगला चैप्टर दूसरा होगा. फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट. नींद आ रहा है. बाय.